नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 68 નો સ્વાધ્યાય પૂરો થવા આવ્યો છે। 68મી ગાથા નો ઘણો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે કર્યો। આજે શેષ ભાગ છે તે આપણે લઈશું અને તે પછીથી ગાથા 69 ની શરૂઆત ગુરુદેવ આજે કરે છે। તો ગાથા 69 આપણે પહેલા લઈએ છીએ। 68મી ગાથા પછીથી અહીંયા કહે છે કે आगे निश्चय न कर जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण और संज्ञा नहीं है। आत्मा इन सब विकारों से रहित है, ऐसा कहते हैं। 69મી ગાથામાં જીવને જન્મ જરા મરણ રોગ લિંગ વर्ण સંજ્ઞા કોઈ પણ નથી। એ બધા વિકાર છે, એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી અને એ બધા વિકારોથી રહિત ભગવાન આત્મા છે। અને 69મી ગાથામાં એ કહે છે। તો ગાથા 69 अस्ति न उद्भव जरा मरणं रोगाः अपि लिंगानपि वर्णा नियमेन आत्मन विजानीहि त्वं जीवस्य एकापि संज्ञा। 69મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે આત્મન હે જીવ આત્મારામ जीवस्य उद्भव न जीव के जन्म नहीं है, जीव के जन्म नहीं है। जीवस्य उद्भव न अस्ति जीव के जन्म नहीं है, उत्पत्ति नहीं। जरा मरणम जरा એટલે વૃદ્ધાવસ્થા बुढ़ापा जरा मरण रोगाः अपि रोग लिंगान्यपि चिन्ह लिंग वर्णाः वर्ण एका संज्ञापि आहार आदिक एक भी संज्ञा व नाम नहीं है, ऐसा त्वं नियमेन विजानीहि तू निश्चय कर जान। શું કહે છે कि हे जीव आत्माराम जीव के जन्म नहीं है, जरा मरण रोग चिन्ह वर्ण आहार आदि एक भी संज्ञा व नाम नहीं है, ऐसा तू निश्चय कर जान। गुजराती में गाथा लईए। जीव ने जन्म जरा मरण रोग वर्ण नहीं कोई, आत्मन संज्ञा लिंग नहीं जान निश्चय सोय। हे जीव आत्मा ने जन्म नहीं जरा मरण अने व्याधि पण नहीं, लिंग वर्ण तथा कोई प्रकारनी आकार आदि संज्ञा पण नहीं अथवा नाम आदि संज्ञा पण नहीं, एम तू जाण। केवो छे आत्मा एनु वर्णन चाले छे। आ भगवान आत्मा ने जन्म नहीं तो पछी मरण पण नहीं, केम के वस्तु अविनाशी छे,
જેનો નાશ નથી થતો એવી વસ્તુ છે, જ્યારથી છે ત્યારથી છે, એટલે એની ઉત્પત્તિ નથી, એનો જન્મ થયો જ નથી, એનું મરણ પણ થતું નથી. જે જન્મ મરણ છે એ પર્યાયમાં છે, એ વખતે પણ આત્મા તો એવો ને એવો જ રહે છે ને. આત્મા જન્મ ને મરણથી કાંઈ બદલાઈ જાય છે એમ તો નથી. ત્રિકાળી વસ્તુ શુદ્ધ છે તો શુદ્ધ સ્વરૂપે એવી ને એવી જ રહે છે. વળી જન્મ મરણ કરે છે સંસાર પર્યાયમાં, તો એમાં એને વૃદ્ધાવસ્થા હોય, ઘડપણ હોય એટલે જરા, અને વ્યાધિ પણ હોય, રોગ પણ હોય, પણ એ બધું આત્માને નથી. આત્મા એનાથી જુદો છે. રોગથી પણ આત્મા જુદો, જરા, બુઢાપો, વૃદ્ધાવસ્થા, એનાથી પણ આત્મા જુદો છે. એટલે એને જન્મ નથી, વૃદ્ધાવસ્થા નથી, મરણ નથી, રોગ નથી, લિંગ નથી. પુરુષ લિંગ ને સ્ત્રીલિંગ ને નપુંસક લિંગ આપણે જે કહીએ એવું કોઈ લિંગ નથી. એ બધું શરીરનું ને એ બધું પર્યાયમાં જે વિભાવ ભાવે થયો, એવા વિભાવ ભાવે થતા એને જે કર્મ બંધાયા છે, તો એવી એની જે દશા થાય તો એને અનુરૂપ શરીર હોય. એટલે એમાં મનુષ્યની પર્યાય થયું હોય તો એને 3 પ્રકારે લિંગ હોઈ શકે. પુરુષનું લિંગ હોય, સ્ત્રીનું લિંગ હોય કે નપુંસક લિંગ હોય. 3 પ્રકારે લિંગ હોઈ શકે. દેવમાં હોય તો 2 પ્રકારે લિંગ હોઈ શકે. પણ એ ગમે તે પર્યાયમાં જાય, 4 ગતિમાં, એમાં જે લિંગ છે એ લિંગ તો તે પર્યાયમાં છે, અને એ પર્યાયને અનુરૂપ શરીર મળ્યું છે તો લિંગ પણ એને અનુરૂપ હોય. પણ એ બધું આત્માને નથી. આત્માને કોઈ લિંગ નથી, વર્ણ નથી, તથા કોઈ પ્રકારની આકાર આદિ સંજ્ઞા પણ નથી. આવો આકાર નથી, એવો આકાર, એવો આકાર કોઈ આત્માને હોતો જ નથી. હાથીનો આકાર ને, રેડકાનો આકાર ને, પછી બધા એના રંગ ને, એ બધું કઈ આત્માને નથી. પ્રભુ, એ બધી વસ્તુ પૂતગળની છે. આ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, એ બધું કોનું? એ બધા ગુણો કોના? એ પૂતગળના ગુણ છે. એ કઈ ચેતન એવા ભગવાન આત્માના ગુણ નથી. એટલે જે કંઈ એ દેખાય છે, દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, અથવા તો જે ઇન્દ્રિય દ્વારા ખ્યાલમાં આવે છે, અથવા એ ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે, એ બધું આત્માનું નથી. અને આગળ કહે છે કે અથવા નામ આદિ સંજ્ઞા પણ નથી, એમ તું જાણ. અને એનો વિસ્તાર કરતા અહીંયા કહે છે કે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિથી વિપરીત, વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિથી વિપરીત એવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ અને બીજા 9 પ્રકારના 9 કષાયો, એ આદિ વિભાવ ભાવોથી જે કર્મ ઉપાર્જન કરાયેલા હોય છે, વિભાવ ભાવે જીવ પરિણમે છે, તો એને એવા આશ્રવ અને બંધ થયા છે, એટલે કર્મ ઉપાર્જન કરેલા છે. અને એના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા વિકારો, હવે એનો ઉદય આવે છે એટલે હવે એને એવા વિકાર થાય છે, તો એ તો નિમિત્તનું કથન છે. એ કર્મના ઉદયને કારણે એને વિકાર થાય છે એમ કેવું એ વ્યવહારનું કથન છે. જીવ પોતે વિકારી ભાવે થાય છે, અને એ વખતે કર્મના ઉદય એવા હોય છે, પણ વ્યવહારથી એમ કહેવામાં આવે કે કર્મના ઉદય છે તો એને એવા વિકારો છે. એટલે કે છે કે તેના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા વિકારો શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જીવના નથી. એ વિકારો જીવની પર્યાયમાં હોવા છતાં પણ એ જીવના નથી. કેમ કે જીવમાં, શુદ્ધ જીવની અંદર કોઈ એવો ગુણ નથી કે જેને અનુસરીને એવા એના પરિણામ થાય. વિકારી પરિણામ જે થયા જીવને, એ પરિણામ જીવના છે. એને લીધે એને આશ્રવ થાય, એને લીધે એને બંધ પણ પડે, ભાવ બંધ પણ પડે, ભાવ આશ્રવ ને બધું થાય, અને એને લીધે ભાવના ભ્રમણ પણ થાય, બધું બરાબર. તે છતાંય જે વસ્તુ ત્રિકાળ શુદ્ધ છે એ તો શુદ્ધ જ રહે છે. એટલે એ કોઈ પણ વિકાર થયો, એ વિકાર શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રવેશતો નથી,
શુદ્ધ સ્વરૂપને મલિન કરતો નથી. અને એ વિકાર જે થયો છે એનું કારણ પણ આત્માની અંદર કોઈ નથી. આત્મા તો શુદ્ધ એવો ને એવો જ છે, એની અંદર એનું કોઈ કારણ નથી વિકાર થવાનું. એટલે એ જીવના નથી. જીવ કરતો પણ નથી, જીવમાં એવો ગુણ પણ નથી. અને વિકાર થયો હોય એ વખતે પણ જીવ તો એવો ને એવો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ રહે છે. ગમે તેટલા વિકાર થયા પણ એક પણ વિકાર મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ પામ્યો નહીં. એટલે એ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જીવના નથી. કારણ કે આત્મા કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે. અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે અને એ અસંખ્ય પ્રદેશ પ્રમાણ આત્મા છે. એના અસંખ્ય પ્રદેશમાં દરેક પ્રદેશે અનંત ગુણ રહ્યા છે. એની એવી સત્તા છે અને એની બહાર એ પહોંચતોય નથી. અને બહારમાંથી કાંઈ એની એ સત્તામાં પ્રવેશ પામતું નથી. એમાં એક પણ ગુણ આગો પાછો થતો નથી, વધઘટ કાંઈ થતી નથી. એવું ને એવું જ સ્વરૂપ છે. એટલે આત્મા કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે. જો અહીંયા કેવળ જ્ઞાન ને ગુણ કયો છે, અપેક્ષાથી વાત કરી છે. જ્ઞાન ગુણ છે અને એ જ્ઞાન ગુણ કેવો છે? જે ઉઘાડની અપેક્ષાથી આપણે મતિશ્રુત અવધિ મનોપર્ય લઈએ છીએ, પણ જયારે પૂર્ણ પણ ઉઘાડ થાય છે તો એ કેવળ જ્ઞાન છે. એટલે એ અપેક્ષાથી આત્મા કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે એમ પંડિતજીએ ટીકામાં લીધું. એટલે અહીંયા ગુજરાતીમાં પણ એ રીતે વાત લીધી છે. માટે સર્વ પ્રકારના કર્મ વિલાસથી તે જુદો જ છે. સર્વ પ્રકારના કર્મ વિલાસથી એટલે કે કર્મના નિમિત્તે થતા એના વિભાવ ભાવથી એ જુદો છે. કોઈ વિભાવ ભાવ આત્માનો નથી. આત્મા એવા વિભાવ ભાવને કરતો નથી. એ થાય છે તો પર્યાયમાં થાય છે. એ વખતે એવી યોગ્યતા છે એટલે થાય છે. અને આગળ કહે છે કે શુદ્ધ સહજ આત્મદ્રવ્યથી ભિન્ન સર્વ પદાર્થો ધ્યેય રૂપ છે એમ જાણો. એવો ભગવાન આત્મા જે શુદ્ધ છે, એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ, એનાથી બીજું બધું જુદું છે. અને બીજું જે કાંઈ છે, જે કાંઈ એની સમીપમાં છે, એ બધું પણ એનાથી ભિન્ન છે. અને એણે મિથ્યાત્વને કારણે પોતાનું માન્યું છે, પરંતુ એ એનું નથી. અને એ બધામાં એને કોઈક રીતે આદર થાય છે, કોઈક રીતે એને ઈષ્ટપણું લાગે છે. તો એ ન તો ઈષ્ટ છે કે ન તો અનિષ્ટ છે. અને એ ન આશ્રય કરવા લાયક છે કે ન આદરણીય છે. એ તો બધું છોડવા લાયક છે. એક શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે જ આદરણીય છે, એ જ આશ્રય કરવા લાયક છે. એટલે કે એ જ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. અને એ તરફ એના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ વળે છે ત્યારે એને નિર્વિકલ્પ સમાધિ હોય છે. એ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિની અહીંયા વાત કરીને એનાથી આ બીજું બધું જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું એ બધું જુદું ભિન્ન છે અને બધું છોડવા લાયક છે. હે રૂપ છે એમ જાણો. તો આ રીતે આ 69મી ગાથા છે. પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી અને આપણે જે પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છીએ એ પુરુષાર્થમાં આ બધી ગાથાઓમાં આવતી વાત છે એને આપણે એક પછી એક ગ્રહતા જઈએ છીએ તેમ તેમ પોતાના સ્વરૂપની દ્રઢતા વિશેષ ને વિશેષ થાય છે. આ બધી પરમાત્મા પ્રકાશની એવી જ ગાથાઓ છે. હવે આપણે 68મી ગાથાનો જે છેલ્લો ભાગ બાકી રહ્યો છે એનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ બીજો, એના પાના નંબર 219. नहीं कर मुक्ति है. राग ने मुक्ति तो मार्ग किया व्यवहार एनी तो बात ही कही तो बंद मार्ग है. समझ में आया? क्योंकि पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है,
मुक्ति की पर्याय अनंत आनंद अनंत ज्ञान दर्शन। केवल ज्ञान के पर्याय भी व्यवहार नहीं का विषय है। हाँ, पर्याय है न, सिखावट में भेद है। भगवान त्रिलोकनाथ जिनवर देव एम कहते हैं। अर्थ पाई जिनवर एवं भणी। प्रभु तुम कौन, कायमी कौन तू क्या है? कायमी चीज तो द्रव्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप। जिनवर हम कहते हैं कि ध्रुव स्वरूप में बंध मोक्ष की पर्याय का अभाव है। अरे मोक्ष मार्ग की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय में द्रव्य का ज्ञान आता है, द्रव्य की श्रद्धा आती है, पर वो पर्याय में द्रव्य नहीं आता। समझ में आया भैया? सूक्ष्म है। जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा गणधर्मों इंद्रोनी सभा में देव धनी में आम कहते थे। प्रभु तने मुक्ति ने બંધિત વ્યવહાર નહીં છે। કેમ કે દ્રવ્યથી નિશ્ચય છે, પર્યાય તે વ્યવહાર છે। એટલે મોક્ષ અને મોક્ષ का महाराज व्यवहार नहीं कहे, शुद्ध नहीं है। समझ में आया? ये अशुद्धता है एम नहीं, मोक्ष मार्ग अशुद्ध है एम नहीं, पर मोक्ष मार्ग की पर्याय को देखना ये भेद है तो अशुद्ध नहीं है। पर्याय है नहीं। और त्रिकाली भगवान सच्चिदानंद प्रभु वो शुद्ध नहीं का विषय है। ये सम्यक दर्शन का विषय कहो, शुद्ध नहीं का विषय कहो। कि 11वीं गाथा में कहा भूतार्थ आश्रित सम्यक दर्शन होता है, ये त्रिकाल द्रव्य के आश्रय सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? पकड़ाई तो पकड़ो प्रभु है। मार्ग तो आते भाई अत्यारे तो बहुत फेरफार करी नाखी। क्यानु क्या पद्मावती देवी ने फलाना दक्ष ने मां ने क्या ना क्या बेचारा भमणे से। आई तो कहते हैं कि साचा देव गुरु शास्त्र, उसकी श्रद्धा भी विकल्प में राग है। ये बंध मार्ग है। भद्रवासिक भाव होता है तो राग नहीं होता है। वो तो बंध मार्ग है। पर यहाँ तो भगवान त्रिकाली आनंद का नाद प्रभु જેમાં સર્વસ્વ શક્તિ પડી है। अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत ईश्वरता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, જેમાં સ્વભાવની મર્યાદા નથી, एक एक शक्ति ની मर्यादा નથી, ऐसी शक्ति। और ये शक्ति में अनंत अनंत सामर्थ्य, ऐसी अनंत शक्ति रूप ध्रुव भगवान वो द्रव्य जो है ये पर्याय को छूते नहीं। हा 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 हा।
49 गाथाમાં आया है समय सा 49। व्यक्त अव्यक्त को व्यक्त नाम पर्याय अव्यक्त नाम द्रव्य दो का एक साथ ज्ञान होने पर भी व्यक्त को अव्यक्त स्पर्शते नहीं। हा 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 हा। व्यक्त नाम पर्याय अव्यक्त नाम द्रव्य दो का एक साथ ज्ञान होने पर भी व्यक्त को अव्यक्त द्रव्य स्पर्शते नहीं। ये 5वां बोले 6 बोले 6 बोल 49 गाथा अव्यक्त ना 6 बोले। समझ में आया? हाँ हाँ। अलिंगरण में 132 गाथा प्रवचन था 20 बोले उसमें 18 में बोले अर्थाबोध रूप गुण विशेष को नहीं स्पर्शने वाला ही भगवान आत्मा। द्रव्य है विशेष में आते नहीं। हा 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 हा। द्रव्य विशेष को स्पर्शते नहीं। बल्ली जी आओ मारो क्षेत्र। हाँ हाँ हाँ। कबीरा जी होता हिंदी होता है। हाँ हाँ। ये व्यक्त को द्रव्य स्पर्शते नहीं। हाँ हाँ। कटते नहीं छूते नहीं। पर्याय पर्याय में रहते द्रव्य द्रव्य में रहते हैं। हाँ हाँ। और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। ये 20वां बोले नाम 19वां बोले अर्थाबोध रूप विशेष पर्याय द्रव्य को आलिंगन करती नहीं। हाँ 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 हाँ। जो वितराकार तत्व दर्शन जो हाँ 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 है मोक्ष मार्ग की पर्याय व्यक्त है और व्यक्त नाम द्रव्य को स्पर्शी नहीं। हाँ हाँ हाँ। आश्रय लेते नहीं। आश्रय का अर्थ वो सन्मुख हुआ तो आश्रय लिया इससे कहने में आता है। हाँ हाँ। पर्याय द्रव्य के सन्मुख हुई तो द्रव्य का आश्रय लिया इन कहने में आता है। तो पर्याय द्रव्य को छूटी नहीं ना सर कैसे। हाँ हाँ हाँ। જેવા તત્વ જ્ઞાનની લહેર आनंद की अनुभव दशा मोक्ष मार्ग की क्षाय संकित और क्षाय की कथा क्या चारित्र ओ पर्याय दैव को छुट्टी नहीं और वो पर्याय में द्रव्य आता नहीं। द्रव्य उसको छुट्टी नहीं द्रव्य आता नहीं। पर्याय छुट्टी नहीं पर्याय क्या आते द्रव्य में जाती नहीं। हाँ हाँ जाती नहीं कहते हैं। समझ में आए व्याख्या आई से व्यवहार नहीं कर मुक्ति की व्यवहार नहीं करे बंधन है मुक्ति व्यवहार नहीं किया है। पर्याय है ना तो पर्याय व्यवहार है। हाँ 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 शुद्ध निश्चय नहीं करना बंद है न मोक्ष है? हाँ हाँ शुद्ध निश्चय तो त्रिकाली वस्तु द्रव्य वस्तु
उसमें तो न बंध है मोक्ष है। हाँ, अशुद्ध नहीं कर बंध है, इसलिए बंध का नाश यत्न कर अवश्य करना चाहिए। बंध का नाशना प्रयत्न व्यवहार नहीं करना, विषय आता है, होता है। प्रयत्न शिष्य कृष्ण क्या होता ना कि निश्चय नहीं से बंध ने मोक्ष आत्मा में नहीं, तो પછી मोक्ष का प्रयत्न करना व्यर्थ है। शिष्य ये प्रश्न था कि बंध ने मोक्ष आत्मा में नहीं, तो मोक्ष का प्रयत्न करना व्यर्थ हुआ। ये सुन तो सही प्रभु, बंध भी पर्याय में, मोक्ष भी पर्याय में, व्यवहार नहीं का विषय है। तो बंध का नाश करने में व्यवहार नहीं का विषय, निश्चय मोक्ष महाराज आता है। समझ में आया? परमार्थ वचनिका में कहा है नहीं, बनारसी दास परमार्थ वचनिका है ना, मोक्ष मार्ग ने पीछे ले गया, आपने लिया है। हिंदी में आया, हिंदी में मोक्ष मार्ग ने पीछे लिया है। 3 रसपूर्ण चिट्ठी, परमार्थ वचनिका, उपादान निमित्त, 3 बोलिया है पीछे लिया है बहुत। तो उसमें ऐसा लिया है, दृढ़ है तो निष्क्रिय निश्चय है, मोक्ष मार्ग निश्चय साधना वो व्यवहार है। समझ में आया? क्षायिक संकीत व्यवहार नहीं का विषय है, केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय, पर्याय है नहीं। यथाचार चारित्र व्यवहार नहीं का विषय, मोक्ष व्यवहार नहीं का विषय, पर्याय है। अरे मूल तत्व ની ખબર ન મળે ને, બહારથી ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। हाँ तो द्रव्य पर्याय को करती नहीं, पर्याय राग को करती नहीं, राग परद्रव्य की पर्याय को करती नहीं। विकल्प है पर की पर्याय को जड़ आत्मा कोई की करती नहीं, और निर्मल पर्याय राग को करती नहीं, और निर्मल भगवान आत्मा निर्मल पर्याय को करते नहीं। हाँ, बे समझाएगी बात है कि लॉजिक से न्याय से तो क्या नहीं आता है। हाँ तो गुजरात का मार्ग न्याय से है, समझ आया? हाँ, अशुद्ध नहीं कर बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न करना चाहिए। हाँ, बंध का नाश का अर्थ मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग भी व्यवहार है, बंध भी व्यवहार है, सद्भुत व्यवहार है। हाँ, पर ये 2 ही है तो अशुद्ध नहीं का विषय। है कई अपेक्षा थी, ये तो शुद्धतानी अपेक्षा है, दुध नहीं नो विषय, व्यवहार नहीं नो कहो, पर्याय नहीं नो कहो, अशुद्ध नो कहो, त्रिकाल से ते शुद्ध नहीं नो विषय है। हाँ, समझ में आया? प्रवर्तन सार में जो ऐसा शुद्धतानी नहीं है ना, आखिर में शुद्धता नहीं है ना। आत्मद्रव्य अशुद्ध नहीं है, कहता नहीं राम पात्र नहीं, विशेष माटी पात्र नहीं बापू, स्वपादी स्वभाव है। हाँ, आत्मद्रव्य शुद्ध नहीं,
કેવળ માટી માત્ર એની બાબત નિરુપાધિ સ્વભાવનું પછી આત્મદ્રવ એકનો ટીકાળી શુદ્ધ નહીં. માટી માત્ર માફક માટીના વાસણ સહિત માટીને જોવી એ તો વ્યવહાર નહીં થઈ ગયો, શુદ્ધ નહીં થયો. એમ ભગવાન આત્માને નિર્મળ પર્યાય સહિત આત્માને લક્ષમાં લેવો એ તો વ્યવહાર નહીં, અશુદ્ધ નહીં હોઈ શકે. હા 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 प्रवचन सारे भैया इसी बात है. यहाँ से आया दूसरे से हाँ पर दिल्ली से आया कोई दिल्ली से है हाँ भाई के तो हाँ 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 અહીં તો આત્મદ્રવી ટીકાળી અને મોક્ષને મોક્ષની પર્યાય વર્તમાન. એ ત્રિકાળી તે શુદ્ધ નયનો અથવા સમ્યક દર્શનનો વિષય અને મોક્ષનો માર્ગ ને મોક્ષ વ્યવહાર નયનો વિષય જાણવા લાયક છે. હા 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 એ મોક્ષનો માર્ગ ને મોક્ષ એ આદરવા લાયક નથી. હે પ્રગટ કરવા લાયક છે એવી વાત છે. એ પુરુષાર્થથી અશુદ્ધ અહીંયા પ્રગટ થાય છે, વ્યવહાર નહીં. મોક્ષ એ પ્રગટ કરવા લાયક છે એમ તો કે ત્યાં કહ્યું ને ભાઈમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ. મોક્ષ છે એ પરમ હિતકર છે, સુંદર છે તે ઉપાધિ છે, નિદ્રા છે તે હિતકર છે, આશ્રવ છે તે અહિતકર છે. હા 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 એ તો જ્ઞાન કરાયું છે. यहाँ तुम કે છે સંવર ઉપાધિ કહ્યો એ પણ અપેક્ષા પ્રગટ કરવાની અપેક્ષા છે. બાકી ઉપાધિ તો ત્રિકાળી ધ્રુવ है उपाधि है. पंडित जी ऐसी बात है. हाँ 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 समझ में आया. આત્મદ્રવ અશુદ્ધ નહીં. ઘટ અને રામપાત્રની વિશેષ માટી માત્ર એમાં ઘડો અને રામપાત્રની પર્યાયની વિશેષતા સહિત માટી એ અશુદ્ધ નો વિષય છે. એમ ભગવાન આત્મા એની નિર્મળ પર્યાય સહિતનો એને જોવું એ વ્યવહાર નહીં નો વિષય, અશુદ્ધ નહીં નો વિષય. હા 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 ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી જે પર્યાય વિનાની ચીજ દ્રવ્ય છે એ ઉપાધિ છે. એ કે જો हाँ इसलिए बंध का नाश करना जरूर. यहाँ यह अभिप्राय है, देखो यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान ये अपना सिद्ध समान नाम पर्याय नहीं. ठीक है हम जानू कहाँ है. सिद्ध समान ये अपना शुद्ध आत्मा वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुष हुआ उपाधि. कहते हैं कि एवं भगवान पूर्णानंद स्वरूप ध्रुव किसको उपाधि है कि जिसको शुद्धात्मा ने वृत्ति में द्रव्य को लक्ष्मी दृष्टि में लिया है उसको उपाधि है.
क्या किया समझ में आया? शुद्ध अनुभूति वाला को यह आत्मा उपाधि है। आम उपाधि करना मानना ये तो धारणा में विषय हो गया। हाँ हाँ, समझ में आया? टिकाणी भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु ये शुद्ध नहीं नो विषय છે પણ ક્યારે તેને ઉપાધિ કહેવાય? હા 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 હા, તેના સન્મુખની શુદ્ધાત્માનુભૂતિ થાય તે કાળે તે આત્મા ઉપાધિ છે. સમજાય છે કાંઈ? सम्यक दृष्टि में ही उपाधि है. उपाधि उपाधि क्या? हाँ, स्वीकारी उपाधि है ऐसा परिणमन हुआ उसको उपाधि है. हाँ 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 हाँ, समझ में आया? जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश निर्मल अनुभूति हुई, अनुभूति ने काल में उपाधि है. क्या उसका आश्रय लिया અને એવું हुआ तो ये अनुभूति में ये उपाधि है. खरीदा जी ऐसी बातें भगवान. अरे आई बातों ने लोगों कहीं तोड़ी नाखे. निश्चय करिए करे प्रभु मारे तो आए हो, तेरा हित का पंथ तो आए भाई. બીજી રીતે કરવા જાય પ્રભુ નહીં હાથ આવે. હા હા હા, સંસારમાં રખડવું પડશે પાછું. જન્મ મરણ કરી કરીને ખોખા નીકળી ગયા છે. નરક ને નિવૃત્તના ભાવ કરી કરી. હા હા, એક શ્વાસમાં 18 ભાવ નિવૃત્તના. બાપુ કેટલું દુઃખ છે ભાઈ. હા હા હા, તારા આનંદના નાથના વિરહમાં આવા દુઃખને સહન કર્યા. હા હા, ઝઘડા ઉભા કરે. આ નહીં આમ કઈ, આ નહીં બધું જાય. આ બધું. હા હા હા, यहाँ तात्पर्य अभिप्राय ये है कि जिस सिद्ध समान अपना शुद्धात्मा टिकाड़ियो ये वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन. हाँ हाँ हाँ, राग रहित होकर स्वभाव सन्मुखनी वितराग निर्विकल्प शांति समाधि से शांति. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ આનંદની શાંતિને કાળમાં તે ઉપાધિ હે. હા હા, એણે આત્માને આદર્યો, એણે આત્માને આદર કર્યો. હા હા, શુદ્ધાત્માનુભૂતિના કાળમાં એણે આત્માને ઉપાધિ માની. હા હા હા, लीन पुरुषों को उपाधि है. अन सब ये है. हाँ हाँ, पर्याय आदि सब ये है. ये 68 गाथा हुई लो. वो 3 दिन से अपने चलती है. बड़ा मेहमान आया नमाते छेली आखिर की लीटी में इतना भरा है, माल भरा है. हैं? पार न આવે એવી વાત છે બાપા. એ ગંધર્વ પૂરું કરી શકે, સંતો પૂરું કરી શકે એવી વાત.
વસ્તુ છે ને, તત્વ છે ને, અસ્થિ પદાર્થ છે ને ભગવાન શીખાવો. तो अस्थि पदार्थ का स्वभाव अस्थि रूपे अनंत है. ऐसा अनंत स्वभाव संपन्न भगवान शीद समान दृढ़ हो, उनकी सन्मुख होकर शुद्धात्मानुभूति के काल में ये आत्मा उपाधि हुआ. हम ख्याल में लिया शास्त्र से क्या उपाधि है, ये उपाधि हुआ तो नहीं. है उपाधि क्या करना, ज्ञान की पर्याय में ऐसा हुआ, तो श्रद्धा की पर्याय में, अनुभूति की पर्याय में उपाधि क्या आया. अनंत पुरुषार्थ है. करना है तो वो ही करना है, बाकी सब है ही है. समझ में आया. समाधि रतो मुक्त जीव સદ્રશ જેવું એમ લીધું છે ને, મુક્ત જીવ સદ્રશ એમ લીધું છે, એટલે સ્થિર સમાન લીધું. સ્વશુદ્ધાત્મા ઉપાધિ ભાવાત્મ્ય આ સ્થિર સમાન લીધું ને, એ મુક્ત જીવ સદ્રશ ની વ્યાખ્યા કરી. कोई अर्थ गाता हुई थे. आगे निश्चय नहीं कर, जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण संज्ञा नहीं है. आत्मा इन सब विकारों से रहित है. ये तो निर्मलानंद प्रभु पिता विज्ञान घन प्रभु ये आ बदा विकार से रहित है, ऐसे कहते हैं. एक विशेष जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण संग नहीं, ये कैसे सब विकारों से रहित अथीन उभो जड़ मरणों रोयमी लिंगमी बना नियमी अपूर्व्याणी तुम जीवई एक भी सनम. हे आत्मराम एम के बोलाया था. भगवान आत्मा तो शुद्ध आत्मा है. वस्तु तरीके जो टिकाड़ी ये शुद्ध आत्मा, ये सम्यक दर्शन का विषय है. ये सम्यक दर्शन का विषय देह ऐसा शुद्ध आत्मा, उसके ही आत्मराम जीवने जन्म नहीं. ये वस्तु है, एमा जन्म नहीं. आगे कैसे जन्म तो देह का है, आत्मा का जन्म नहीं. आत्मा में जन्म नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, पर आत्मा में जन्म नहीं. आत्मा का जन्म नहीं एम नहीं, पर आत्मा को जन्म नहीं. आत्मा का जन्म नहीं अर्थात आत्मा कोई नया उत्पन्न होता नहीं.
तो अनादि नित्यानंद प्रभु शुद्ध आनंद कंद विज्ञान कंद ऐसी जो चीज आत्मा, उसमें हे आत्माराम जन्म नहीं, तुम जन्मते नहीं। जन्म नो दे नो जन्मो। तेरी चीज जो है शुद्धात्मा पूर्णानंद स्वरूप, इसमें तो जन्म नहीं। ऐसी चीज पर दृष्टि करना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है। पूर्णानंद का नाद प्रभु अनंत अनंत गुण का गोदाम, अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत स्वभाव का सागर, ऐसी जो चीज उसको ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा सम्यक दृष्टि का विषय है। सुकुचल जी, ये आत्मा राग से व्यवहार से प्राप्त होता है, ये आत्मा नहीं। समझ में आया? राग आदि भाव जो है व्यवहार, दया दान व्रत आदि, ये राग से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें राग है नहीं। है ये धर्मानुरागी राग विकार है। विकार आत्मा में है नहीं, और वो विकार से आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। ऐसी चीज है भैया। परमात्मा प्रकाश है ना, वस्तु त्रिकाली वही परमात्मा प्रकाश है। सहजानंद स्वरूप प्रभु, जिसमें जन्म नहीं। हे आत्म राम शब्द दिया, देखो पाठ में चो टीका। हे आत्मनम, हे जीव, ए बे बात। प्रभु तुम तो आत्मा है ना प्रभु, तो आत्मा तो इसको कहिए कि जिसमें जन्म नहीं। हे जी आत्माराम, जन्म नहीं है, जरा बुढ़ापा नहीं है। शरीर की अवस्था वृद्धावस्था, वो आत्मा में नहीं तो जड़ की अवस्था है। भगवान आत्मा तो ऐसा ऐसा अनादि का शुद्ध आनंद घन है, उसमें बुढ़ापा ये शुद्ध आनंद घन जो चैतन्य मूर्ति मौजूद चीज जो है, उसकी दृष्टि बिना राग की एकता बुद्धि में बाल अवस्था है। वो पर्याय में वस्तु तो वस्तु है, राग की एकता बुद्धि ये आत्मा की पर्याय में बाल अवस्था, वस्तु में नहीं। और वस्तु का भान होना सम्यक दर्शन, अंतर आत्मा बहिर आत्मा
और राग आदि विकल्प को अपना मानना तो बहिरात्मा की बाल अवस्था है, पर्याय नहीं है, वस्तु में नहीं है। बहिर नाम उसमें जो चीज नहीं, उसको बहिर नाम बहिर की अपना मानना, वो पर्याय में बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो परमात्मा स्वरूप ही है। समझ में आया? हाँ चीज भाई अनंत काल थी दुखी है। समझाऊं क्या ही? हमारा अमतो छोकरो આવ્યો તો વાત કરી હતી। એક છોકરો છે ને ભાઈ કોટભાઈના છોકરાનો છોકરો અહીં છે, કોટભાઈ લીમડીવાળા એનો છોકરાનો છોકરો કેવું તારા બાપના મામા પાસે 2 અબજ ને 40 કરોડ રૂપિયા છે અત્યારે। 2 અબજ 40 કરોડ શું સમજી છે? 2 અબજ 40 કરોડ, 2 અબજ સમજते? अबज नहीं, 1,00,000 करोड़ का 100 करोड़ का 1 अबज, 100,000 का 1,00,000, 100 लाख का करोड़, 100 करोड़ का 1 अबज। हाँ हाँ हाँ। एक अभी है गोवा में जैन थनकाशी, गुजरी गई हो तो उसकी स्त्री पड़ी है 1.25 वर्ष में बेपान। हाँ हेमरेज हो गया है 1.25 वर्ष से। तो उसके पास पैसा तो 2 अबज 40 करोड़ है। अभी उसका पति तो मर गई 1.25 वर्ष पहले, 10 मिनट में रात से वो स्त्री को हेमरेज हो गया था। हेमरेज कहते हैं। हाँ वो तो मुंबई लाया था ત્યાં से, गोवा से, तो डॉक्टर बताने, तो उसको ही रात्रि को कोई 2-4 दिन के इसने मैं 1:30 बजे खड़ा हो गया। मेरे को दुख से बस डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया पहले, भगवान चले गए। हाँ हाँ उसके पहले उसकी आत्मा मर गई। पहले उसके पहले उसकी आत्मा मर गई, मर के जाए। शरीर दे छूटा उसको मर गया कहते हैं। आत्मा मरते नहीं, आत्मा जीते नहीं, वो तो आ गया ना अपने। आत्मा वो है जिसको आत्मा ध्रुव कहते हैं, वो तो पर्याय में भी आता नहीं, शरीर में तो आता नहीं। आई चीज भाई जिनवर देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर जगत के पास जाहिर करते हैं, प्रभु तुम कौन छे, क्या है? तो कहते हैं प्रभु तुम तो पूर्णानंद का नाथ है, बराबर ध्रुव स्वरूप है, वो उत्पन्न होता नहीं, व्यय होता नहीं, पर वो ध्रुव स्वरूप ही उत्पन्न पर्याय में आता नहीं। हाँ 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 भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु, वो कहीं उत्पन्न होता नहीं ध्रुव, और व्यय होता नहीं ध्रुव, पर वो ध्रुव चीज जो है जिसको परमात्मा आत्मा कहते हैं निश्चय, वो तो अपनी उत्पन्न पर्याय में आता नहीं। उत्पाद वही ध्रुव युक्त सत है। समझ में आया है? वो सम्यक दर्शन का विषय है। बाकी 1,00,000 करोड़ बीजी बात करे, वो चढ़ावा में नहीं आता। 1,00,000 बात की बात निश्चय और आणो छोड़ी जगत बंद फंद, एक निज आत्म और जाओ। हमारी आत्मा में लखा
કોણ લખાવે છે? એ લખવું એટલે જાણવું. લખવું જાણવું होता है है? लखन जानो तो अपने को अपने जाने, दूसरा कौन जाने? हाँ हाँ हाँ, ये तो हमको याद है पर है? ये तो आपने बताया जैसे हमको पाठ याद है। ऐसा नहीं. पाठ याद है। दृष्टि में, अनुभूति में जब आते हैं तब वो आत्मा का ज्ञान होता है. राग से हटकर निर्विकल्प राग बिना की अनुभूति, ये अनुभूति की पर्याय के काल में आत्मा जानने में आता है. क्योंकि वो देह जो आया, ये अनुभूति हुई तो देह की लक्ष्य से हुई. तो अनुभूति में आया तब जानने में आया, ये बिना जानने में आता नहीं. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया दशरथलाल जी? ऐसी आत्मा है. लोगों तो बाहर में इतनी ककड़ा को था ऐसे व्रत पालन, दया पालन, भक्ति करो, पूजा. वो तो सब विकल्प है, राग है. ये राग से प्राप्त नहीं होता. हमें ये चीज ऐसी है कि अनुभूति के काल में ही प्राप्त होता है. समझ में आया? भगवान शुद्ध चैतन्य घन, आई परमात्मा की व्याख्या है ना, तो ये आत्मा जो है ही परमात्मा है. शक्ति है, परमात्मा है. व्यक्ति पर्याय में परमात्मा होता है तो पर्याय में होता है. समझ में आया? हाँ हाँ. जैसे छोटी पीपर होती है ना, नींडी पीपर कहते हैं, छोटी पीपर इतनी, इसमें चरपराई बाई में अल्प है, पर अंदर में चरपराई 64 पेरी भरी है. चरपराई तीखा, हमारे तीखा रस कहते हैं, हमारे चरपराई कहते हैं. तो 64 पेरी ये नाम वो घूटते हैं तो प्रकट होती है, तो कहां से हुई ये बाहर अंदर है. 64 पेरी इतने, 64 पैसा इतने, 16 आना ईट अर्थात 1 रुपयो अर्थात पूर्ण. हाँ हाँ हाँ. भगवान आत्मा अपना स्वभाव में जैसे ही लींडी पीपर में छोटी पीपर 64 पेरी चरपराई पड़ी है, वही लींडी पीपर, वही छोटी पीपर, ऐसे भगवान आत्मा में पूर्ण ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता पूर्ण ध्रुव पड़ा है, उसको आत्मा कहते हैं. पर्याय को नहीं. पर्याय को व्यवहार आत्मा. हाँ हाँ भैया, ऐसी बात है. हाँ, हरे भाई जन्म मरण કરીને 84 અવતારમાં દુઃખી છે. या पैसा वाला કહેવાય, ધૂળ વાળા, ધૂળના ધણી. ये दुखी है बेचारा, भिखारा है. पर को मांगते हैं, अपनी चीज है उसको जानते नहीं है. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 68 ગાથાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણો કર્યો. એ ગાથા પૂરી થઈ અને 69મી ગાથાનો હજી વધુ વિસ્તાર આવશે. એ બધું આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. सुसंत चली दिन रात
ते